आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करेंगे। To know the reason, you have to watch the video till the end. What happens when we are stuck in a difficult situation? Did anyone try saying, I am enjoying this challenging time so much. I really love challenges and I want them to multiply. I'm sure no one says like that. The common statements used are, I am tired now. I don't have enough patience and strength now. Why these challenges are not ending? Why me? Why everything is not normal? And so many. Now let us think out of the logic and move towards reality. हमें लगता है दुनिया हम चला रहे हैं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और जब ऐसा नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है। हमें लगने लगता है जिस टाइम जिस दिन हम जो भी चाहें वो तभी पूरा हो जाए। दिमाग में एक थॉट एक विश आई और वो पलक झपकते ही पूरी हो जाए। ऐसा बहुत ही कम होता है। हर चीज़ के पीछे कठिन परिश्रम और संयम चाहिए। अगर इस बिलीव को एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ें आपको थोड़ी स्मूथ लगने लगेंगी। Even if you claim that you have done enough, you are left with zero patience and strength, still this will not reward you. Sometimes situations demand your extra patience and extra strength. And the reason behind this is very simple. हमें लगता है दुनिया हम चला रहे हैं। जब समझ आ जाएगा ऐसा नहीं होता तब हम शायद कंप्लेंट्स करना छोड़ दें। Whether we like it or not, we have to accept the reality. When we realize that our constant efforts are unable to change the reality, then we do not have any other option but to accept. This might take some time, which is okay. And now when you have accepted it, it is the time on how you flow with it. Instead of looking at the complicated side, which you are not able to solve, try to look at the simplified version, which you can understand easily. And the simple thing says that we do not have answers to all the questions. Why is this happening? Why is this not happening? So it is better not to hunt for answers that are not in our control. What we can do is have patience and expect nothing. Yes, you heard me correct, nothing. Try to remain peaceful and just observe as to what is happening. Sometimes we do not have control over so many things. So it is okay if you're not able to unravel the entangled web. Leave it like that. Wait and observe, because when things look chaotic and challenging, they are actually making way for a bright day. Believe me or not, हमें लगता है दुनिया हम चला रहे हैं। एक बटन प्रेस कर देने से सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब एक और सवाल इसमें ऐड कर देते हैं, कब तक रिजल्ट्स मिलेंगे? पॉजिटिव काम सब कुछ हो गए लेकिन रिजल्ट्स तो मिल ही नहीं रहे। इसका आंसर तो नहीं है, पर अगर इसी वक्त इसी सिचुएशन में पेशेंट और हैप्पी रहना सीख लिया तो शायद रास्ता स्मूथ लगेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, कंप्लेंट्स करना अलॉन्ग विद मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू चूज। Stop worrying when you witness that things are not falling your way. Maybe they are getting fabricated for something better. Looks difficult, but trust me, if you are able to absorb this, you will grab a better experience. Even now, if you have more questions or you think still the information is incomplete, just absorb this in your mind.
हमें लगता है दुनिया हम चला रहे हैं और सब कुछ हमारी मर्जी से ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थिंक बियॉन्ड लॉजिक एंड डेफिनेटली यू विल हैव बेटर क्लैरिटी।